Welcome to this Wednesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, विशाल शर्मा। नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़ी ताजा खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। कार्यक्रम में आज चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए.के. भट्टाचार्य जी। मार्केट मंत्र में आपका स्वागत। नमस्कार। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The United States announces release of crude oil from its strategic reserve in coordination with India and others to ease prices. Union Cabinet completes formalities to repeal the 3 farm laws. Cabinet approves Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another 4 months. And domestic stocks decline 0.5% amid weak global cues. अमेरिका ने कच्चे तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए भारत और अन्य देशों के साथ मिलकर अपने रणनीतिक भंडार से कच्चा तेल जारी करने की घोषणा की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने संबंधी औपचारिकताएं पूरी की। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 4 और महीने के लिए बढ़ाया और कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% की गिरावट। We begin with our lead story. The US President Joe Biden announced to release around 50 million barrels of crude oil from strategic reserves in coordination with India and other major global energy consumers like South Korea, Japan and Britain to ease crude oil prices. The coordinated step comes as OPEC Plus producers repeatedly ignored calls for more crude production. In this regard, India has already announced release of 5 million barrels of crude oil from its strategic petroleum reserves, saying that pricing of liquid hydrocarbons should be reasonable, responsible and be determined by the market forces. Though China had also promised to be a part of this coordinated step, but today its foreign ministry spokesman said that China will release crude oil from its reserves according to its needs. Yesterday, in a press release, India said that it has repeatedly expressed concerns at the supply of oil being artificially adjusted below the demand levels by the oil-producing countries, leading to rising prices and negative attendant consequences. Though the release of 5 million barrels of crude is around half of India's daily domestic consumption, it is seen as a symbolic move as oil consumers are willing to band together against OPEC's reign over the markets. And to ease the retail oil prices at domestic level and to control inflationary pressures, the government of India had reduced the central excise duty on petrol by 5 rupees and diesel by 10 rupees on the 3rd of this month. It was followed by reduction in VAT on fuel by many state governments. Prime Minister Modi has been consistently reviewing the high petroleum and diesel prices domestically. The government eased the central excise duty despite the high fiscal burden on the government to provide relief to citizens. And oil prices today remained steady as investors showed caution assessing the effectiveness of oil release by the major energy consumer countries from strategic reserves. Investors are closely watching the response of oil-producing countries. In the intraday trade, Brent crude was trading around $82.20 per barrel, while WTI crude prices were at $78.80 per barrel. Well, Bhattacharya sir, this is actually something big, very humongous and almost unprecedented which has happened now. The US and other countries, the high energy consuming countries, they have kind of decided to release from their reserves in India as well. So what do you make of it actually? Well, if you look back in time, something similar had happened in 2011 after the Libya shutdown of their wells. And there was a sudden shortage of oil products. And then some of the countries, including US, led once again by that, they released some extra barrels of oil into the market to ensure that the prices do not skyrocket. What has happened now is in anticipation of a possible firming up of global crude oil prices reaching a level that might
strengthen and intensify the inflationary pressure in the global economies. As you would know, that the US is running an inflation rate of around 6%. That's true. And Europe is having around 4%. And in India also, we are struggling with the inflation rate of consumer price of a little less than 6%. So therefore, this is a kind of a symbolic gesture. Remember that the daily consumption of petroleum products in the world is around 100 million barrels. Now, what has been done is 50 million from US and 5 million from India, and maybe some few more million barrels per day by different countries. So this will have some sort of symbolic impact on the global crude oil prices. One still does not know how the OPEC will look at this gesture and whether they will consider at their next meeting, which is due, I think, in December, whether they will consider lifting the cap on their daily production levels. So I think, given the situation that the global consumers of crude oil have, in a sense, got together. So this is not a buyers collective as yet, but certainly it is a gesture to the oil producers that they need not use their cartel power to a point where and leverage that. जी, घरेलू स्तर पर क्या हम इस फैसला जो लिया गया है, क्या घरेलू स्तर पर हम बहुत जल्द कीमतों में कमी या कच्चे तेल की, पेट्रोल की, डीजल की कीमतों में कमी देखेंगे? जैसे आपको मालूम होगा कि जो कच्चे तेलों के दाम के ऊपर भारत की जो अपनी जो भूमिका रहती है वो काफी सीमित रहती है, क्योंकि हम करीबन 85% हमारे तेल की जो खपत होती है हम वो आयात करते हैं। तो अगर विश्व में अगर तेलों के दाम बढ़े रहे या एलिवेटेड रहे तो मैं समझता हूं कि जो हमारे देशीय अंतर्देशीय जो रिफाइनर्स जो हैं, जो तेल का जो प्रोसेस करते हैं, उनके लिए उनका कॉस्ट बढ़ जाता है और उनके मार्जिन में कमी आती है। इसीलिए केंद्र सरकार ने ये रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को कम कर दिया। मैं समझता हूं कि वो भी एक बहुत एक तात्पर्यपूर्ण एक स्टेप था, क्योंकि सरकार ने रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को घटाया, एक्साइज को नहीं घटाया। अगर वो एक्साइज को घटाते तो स्टेट्स को पैसे कम मिलते। जी, केंद्र ने अपने ऊपर एक धक्का लिया, हिट लिया और तेलों के दाम घटाने। उसके बाद काफी प्रदेशों ने हमारे देश में प्रदेशों ने उनकी जो वैट की कमी की। इसके सिवा मैं ये नहीं समझता कि और कोई चारा है कि तेलों के दाम हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे। हाँ, कंजर्वेशन एक लॉन्ग टर्म एक है कि कम इसका इस्तेमाल हो, और एक जो है स्पाइकिंग ऑफ, जिसे हम ऑयल कहते हैं, जो बायोफ्यूल्स जिसे कहते हैं हम, उसका संमिश्रण करना तेलों के साथ, उससे भी हम अपनी जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट जो आयात करते हैं उसमें हम एक अंकुश लगा सकते हैं। पर अभी तक जो हमारी जो रेट है वो 10% है, और 10% से अगले साल में वो 15% जाएगा, और 22 के अंत तक हम कोशिश कर देंगे उसका 20% में ला सकते हैं। तो ये सारे कंजर्वेशन, जो टैक्सों के ऊपर थोड़ी बहुत रोक, और जो फ्यूल में जो स्पाइकिंग जिसे हम कहते हैं बायोफ्यूल से, उससे हम इस चीज को थोड़ी बहुत कंट्रोल में ला सकते हैं। Talking of this coordinated efforts by India, Japan, South Korea and other countries, the high energy consuming countries, Bhattacharya sir, do you feel that actually besides the economics and oil, is it also sort of a strategic effort to corner, the oil producing, especially OPEC countries and all, because kind of they have been having this monopoly kind of a thing, as in we can bring in this the Quad thing, as in we can draw a parallel from that. Is it something like that? Well, there is a strategic element in this entire effort. There's no doubt about it. As I was hinting at earlier, that there's some sort of a sense of a bias collective here, that countries that are huge consumers of oil, they are taking a step
and sending out a signal loud and clear to those who produce the oil and those who continue to impose a cap on their production. Remember that each of the countries that have contributed to this release of the oil from their strategic reserve are also facing some sort of pressure of inflation back home. True. So while internationally it is a strategic move, sending out a signal to oil producers, domestically it is a move to temper the inflation temperature a bit. To placate, जी, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। ये तीनों कृषि कानून हैं: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य अधिनियम 2020, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण मूल्य आश्वासन समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। ये अधिनियम पिछले वर्ष संसद के मानसून सत्र में पारित किए गए थे। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को मंत्रिमंडल के फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इन तीनों कानूनों को निरस्त कराना सरकार की प्राथमिकता है। इससे पहले इस महीने की 19 तारीख को राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का फैसला किया है। भट्टाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि कानूनों को आखिरकार सरकार ने वापस लिया है, लेकिन जो इन कानूनों को लाने के पीछे जो सरकार की मंशा थी वो थी कृषि क्षेत्र में सुधार। अब इन कानूनों के वापस लिए जाने के बाद कृषि क्षेत्र में सुधारों पर जो एक सरकार का एक नजरिया था और उस पर क्या असर आप देख रहे हैं? मैं समझता हूं कि जो कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है वो प्रधानमंत्री के जो वादा उन्होंने देश को एक संबोधन में जो उन्होंने वादा किया था उसी का ये पूर्ण कर रहे हैं वो। और दूसरी तरफ जो कृषि कानूनों में और जो सुधार की जो बात आपने कही, मैं ये समझता हूं कि अगले सत्र में जो आने वाले जो पार्लियामेंट के सदन में जो ऐसे कानून डिस्कशन या आलोचना या चर्चा होने की उम्मीद हम रख सकते हैं, क्योंकि ये कृषि कानून क्योंकि काफी कृषक जो एजिटेशन के लिए इसको अब निरस्त कर दिया गया है, पर कृषि क्षेत्र में जो सुधार की जरूरत है केंद्रीय सरकार इससे मेरे ख्याल से पीछे नहीं हट रही, बल्कि इसकी जो दायरा है वो बढ़ के स्टेट्स को जो अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। और काफी ऐसे स्टेट्स हैं, आपको मालूम होगा, जो कृषि जो है वो स्टेट लिस्ट में है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। तो स्टेट्स को, प्रदेश सरकारों को इसमें अगर साझा बना के अगर एक जॉइंट अप्रोच से कृषि क्षेत्र के सुधारों को काम आगे बढ़ाया जाए, मैं समझता हूं कि कृषि क्षेत्र की जो बहुत जरूरी सुधार हैं, जो निवेश की जो जरूरत है, ये हम पूरी कर सकते हैं। मंत्रिमंडल ने आज एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को, अन्य योजना को और 4 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि योजना के 5वें चरण में इसे मार्च 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। Well, it's time to slip into a quick break now, but please stay tuned because we have lots coming up on the other side. मार्केट मंत्रा brought to you by नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पानी यूं मत डाले जाओ, ऋतु देख के फसल उगाओ। सिंपल है छोटे, कि अपने लक्ष्य को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करना सीखो, पैसा ऐसे ही मत लगाते जाओ। ओ, तो ये बात है। हाँ छोटे, अगर पढ़ाई के लिए या किसी की शादी के लिए जोड़ना है रुपया, तो उसी हिसाब से तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना भैया। बड़े भैया। छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। Welcome back to Market Mantra. Before the break, we were talking of this Garib Kalyan Anna Yojana scheme getting extended by another 4 months. Bhattacharya sir, how do you see this? Has actually this has been the backbone over the last 1.5 years which the government has actually played out, especially to the most vulnerable sections of our society. So do you really feel that it's going to help that much more, and is this 4-month times for which it has been extended, is it good enough? Well, I think this scheme which was announced immediately after the second wave of COVID-19 was to have ended in November.
and the fact that the government has decided to extend it for another 4 months is both from the healthcare and disease point of view is a cautionary step, and at another level it is also a step taken in advance to prevent any possible outcry or any backlash, as it happened last time that early victory was declared over the COVID. So I think government has drawn the right lessons and they have taken the right steps. And even though we do see the number of COVID cases coming down pretty rapidly in the last few days, the government is not taking it lightly. The government realizes that there is need to make sure that the poor keep getting their 5 kilograms of rice and wheat without paying any money. So that's a very important thing. And it is also important from a fiscal point of view. Remember that the center will, as a result of this major move, will take an annual additional hit of 2.6 lakh crore on its finances. This extension itself is taking a hit of around 53,000 crore rupees. Now already is being continued till November. The government has taken around 1.9 point something, almost close to 2 lakh crore. Now what it means is that the good tax collections, the healthy growth of direct taxes growth, which so far has given a growth rate of 55% or so. Now that extra revenues probably the government is using to make sure that the poor in the country do not get adversely affected due to the COVID-led disruption. Indeed, the robust GST and other tax collections that give the government that much of more legroom and elbow room to just extend these things. So moving on to the next story, and talking of the stocks today. शेयर बाजारों की बात करें. The Sensex and the Nifty today fell 0.5%, pairing early gains, but stocks fell amid mixed cues from the global equity indices. The Sensex at the Bombay Stock Exchange closed below the 58,500 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange settled near 17,400 level. The Sensex declined 223 points or 0.55% to trade at 58,341. The NSE Nifty also fell 88 points or 0.5% to trade at 17,415. And in the broader market of the BSE, the mid-cap index fell 0.57% and the small-cap index gained 0.44%. And in the Sensex pack, shares of 9 companies gained while 21 logged losses. Kotak Bank was the top gainer as it surged 1.5%, followed by NTPC, which gained 1.4%. ICICI closed 1.1% up, while Bajaj Finance added 0.7%. While on the other side, Maruti plunged 2.4% and Infosys tumbled 2%. ITC declined 1.6%, while Reliance fell 1.5%. And in the sectoral indices, all the 14 sectors logged losses. Oil and gas gained 0.8% and utilities sector stock rose 0.5%. On the other hand, IT and Auto both fell 1.2% and tech slipped 1%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 1,982 companies gained while 1,308 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में आज गिरावट रही. शुरुआती बढ़त गंवाकर सेंसेक्स और निफ्टी में 0.5% की गिरावट दर्ज हुई. सेंसेक्स 58,500 के निशान से नीचे बंद हुआ, जबकि निफ्टी 17,400 के स्तर के नजदीक बंद हुआ. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 223 अंक लुढ़ककर 0.55% के नुकसान से 58,341 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 88 अंक गिरकर 0.5% नीचे 17,415 पर आ गया. व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.57% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.44% की गिरावट दर्ज हुई. It's time yet again to slip into a quick break. Please stay tuned. We are having lots more on the other side.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि पैसा पैसा जोड़ के बन जाए रुपया। सिंपल है छोटे कि इन्वेस्टमेंट थोड़े से पैसों से भी शुरू हो सकता है भैया। ओहो तो ये बात है। हाँ छोटे, आज थोड़े से पैसों को सही जगह लगाएंगे तो कल जरूरत के वक्त पर वही काम आएंगे। बड़े भैया छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Welcome back. Bhattacharya sir, what do you make of the wild swings and especially the deep red color that we see in the market over the past few sessions? Though yesterday for a brief period we did see some green shoots coming up. Today as well, this morning it was in the green, but then again it plunged into the red. What do you see of it? Well, I think the Indian stock markets are wrestling with many factors, not just domestic but also international. As you yourself pointed out, that the global cues were mixed, and as a result, the US, as I was also saying, the US inflation rate, the European concerns about challenges arising out of both inflation and resurgence of COVID-19 there are also all casting a pall of gloom over the global international stock markets. Yeah. Now, clearly, the investors from there into the Indian stock market are also responding to a kind of indication of how the global central banks will phase down their bond purchase program. So as a result of which there is some sort of a slow gradual withdrawal of the foreign portfolio investors from the Indian market. That is one factor. Mm-hmm. The second factor is that the Indian stock markets had a clean run, which the Sensex went up to 62,000, and then it is probably some sort of profit booking has happened, and some sort of recognition that the resistance level is to be found for the stock market. Mm-hmm. So there is some profit booking taking place. Some secondary market money is moving out of the secondary market into the primary market because of a flurry of IPOs. Yeah. But the important point is that even today, if you see that the mid-cap index made some gains, the small-cap index made some small gains, and if you look at the overall breadth of the market, you still see the advances are more than the declines. So I think the market is at a point where from being an index-based market, mm-hmm. it is becoming a stock-specific market. So if in terms of the retail investor, they have to be extremely judicious and cautious if they are playing with their own money, and that to see which stocks do better instead of blindly following in which direction the index or indices are moving. जी, ऐसे कौन से सेक्टर आपको दिखाई पड़ते हैं कि जो इन्फ्लेशन की आपने बात की कि वैश्विक स्तर पर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ऐसे कौन से सेक्टर हम देखें कि जो कि इन्फ्लेशन प्रूफ हो, यानी कि जिन पे इन्फ्लेशन का कोई असर न दिखाई पड़ता हो? देखिए, जो इन्फ्लेशन का जो असर जो होता है वो डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट तरह से आता है. अगर आप जो एक्सपीरियंस इंडस्ट्री जो है, जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री जो है, जहाँ पे कंजम्पशन होती है रिकवरी फेज में आकर, अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट उतना ज्यादा नहीं होगा. तो मैं समझता हूं कि जो टच इंडस्ट्री जिसे कहेंगे आप, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री देखिए, एविएशन सेक्टर की ओर देखेंगे, तो उसमें आप काफी जो अपसाइड अभी भी आपको थोड़ी बहुत नजर आएगी. पर अगर आप हार्डकोर मैन्युफैक्चरिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे वो उतनी आपको नजर नहीं आएगी. और अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर को देखेंगे, जिस तरह से उन्होंने इस कोविड-19 के सेकेंड वेव के उसको उन्होंने संभाला है, किस तरह से एनपीए में उन्होंने रोक डाल दी है, मैं समझता हूं ये फाइनेंशियल सेक्टर भी काफी एक अपसाइड देने की एक उम्मीद आप कर सकते हैं. जी, प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक.
बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि बूंद बूंद से सागर भर जाता है। सिंपल है छोटे कि छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट जुड़कर बड़ी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। ओ तो ये बात है। हाँ छोटे, जब ढेर सारे पैसे होंगे उस दिन का इंतजार मत करिए, जितना भी पैसा हो इन्वेस्ट करना शुरू करिए। बड़े भैया। अरे छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत। बात करेंगे आप रुपए के प्रदर्शन की। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज 3 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 74 रुपए 40 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। रुख करते हैं एशियाई बाजारों का। अधिकतर एशियाई शेयर बाजार आज बिना किसी उतार चढ़ाव के बंद हुए। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स और हांगकांग का हैंग सेंग 0.1% की बढ़त में रहे। जापान का निकेई 1.6% की गिरावट में रहा और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.1% नुकसान में रहा। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे। लंदन का FTSE 100 अपने पूर्व स्तर के आसपास बना हुआ था, जबकि फ्रांस का कैक 0.3% और जर्मनी का डेक्स 0.7% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। And moving on to the US markets, the Nasdaq logged its Wall Street peers yesterday as rising treasury yields weighed on major technology stocks, while gains in banks and energy helped the S&P 500 and the Dow Jones to gain. The Dow Jones rose 0.5% and the S&P 500 added 0.2%, while the Nasdaq Composite Index declined 0.5%. बात करेंगे कमोडिटी की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर दिसंबर में आपूर्ति वाले सोने का मूल्य आज 35 रुपए कम होकर 47,490 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी 20 रुपए की मामूली मजबूती से 62,530 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मामूली तेजी के साथ $1,791.90 प्रति औंस पर था, जबकि चांदी गिरावट के साथ $23.60 प्रति औंस के आसपास कारोबार कर रही थी। Bhattacharya sir, talking of the RBI meeting, which is due very soon, probably next week, do you see actually the governor, the central bank governor, going back on the accommodative stance which we have been having this for the past 1.5 years? Do you see this happening? I think is an important question. I don't think that the RBI governor believes or loves in giving nasty surprises. Mm-hmm. So all that we have seen so far, whatever he has done, whatever twists and turns he has given to the conduct of the monetary policy, he has done things in a phased and gradual manner without giving any jerks to the market. Mm-hmm. And I don't think his timeline for a gradual withdrawal of liquidity and then probably increase in the rates, that timeline remains intact. And in this monetary policy review, I don't expect any increase in the rate, but certainly some more steps to suck out some more liquidity from the market. A.K. Bhattacharya जी, आप कार्यक्रम में शामिल हुए और इतनी महत्वपूर्ण और इतनी उपयोगी चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Namaskar. Thank you, sir, for coming in to our studios. And before we close, a reminder of the headlines once again. The United States announces release of crude oil from its strategic reserve in coordination with India and others to ease prices. The Union Cabinet completes formalities to repeal the 3 farm laws. Cabinet approves Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana for another 4 months, and domestic stocks decline 0.5% amid weak global cues. And that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team of Market Mantra, it's goodbye till we meet again tomorrow. Market Mantra.